Very good morning, all of you. So today we are going to start exercise 14B. As our chapter is going on, perimeter and area exercise already we are done. Okay. So first question, exercise 14B. Actually, all the question of exercise 14B most of based on diagram only. Okay. So first of all, we'll make the diagram of first question. Let's see here. Actually, this is a square, and in this square, another square is there. Check it properly. Very easy question. Okay, two square is there. Now we have to find out the shaded portion of this area. How to find out this shaded portion? So if you observe, this is a bigger square, and this is a smaller square. So अगर मैं bigger square को अगर मैं smaller square से minus कर दूँ, if I delete this square, then remaining portion will come out. Yes or no? So what is the dimension of bigger square? That is 8 meters. Each and every side is 8 meters because this is a square. And the smaller square, that is 4 meters. Smaller square is 4 meters. Okay. So what I have to do? First of all, we will find out the area of bigger square, then area of smaller square, then minus. So let's see. Area of bigger square, that is how many? Side multiplied by side, that is 8 multiplied by 8, that is how many? 64 meters square. That is the area of bigger square. Okay sir, okay. And area of smaller square also. Area of smaller square is equals to 4 multiplied by 4, that is 16 meters square. So what I have to do? Area of bigger square minus area of smaller square. That means this is your remaining designing shaded portion. So we can say area of shaded portion is equals to how many? 64 minus 16 and bracket meter square is equals to 48 meters square. That is your question number first part done. Okay, understood? So now next part, first question, second part. Second part भी अगर आप देखोगे तो same process is there, but this is a rectangle, nothing else. So let's see. I will make this rectangle. This is a bigger rectangle, and another is smaller rectangle. अब इसमें dimension देख लेते हैं एक बार. This dimension is given 24 meter, and this dimension is given 20 meter. This is 22 meter, and this is given 18 meter. Okay, बस उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है. You have to find out this shaded portion. Yes, how will find out? चलो सबसे पहले find कर लेते हैं. What is the area of this bigger rectangle? Area of this bigger rectangle. शॉर्ट में लिख रहा हूं rectangle. Okay. अब देखो जो हमारे पास बिगर रेक्टेंगल है ना, उस बिगर रेक्टेंगल का लेंथ कितना है? 24 and breadth is how many? 20 meter. And what is the formula of bigger rectangle? L into B. कोई भी रेक्टेंगल हो, bigger and smaller कोई फर्क नहीं पड़ता. So the area of rectangle is equals to L multiplied by B. That means 24 multiplied by 20 meters square. That is how many? 480 meters square. Understood? अब हमें सेकेंड वाला फटाफट मल्टीप्लाई करके बताओ मुझे. एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इज हाउ मेनी? 22, ब्रेथ इज हाउ मेनी? 18 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 396. Nice, 396 meter square. Now what I have to find out? Shaded area. So area of a shaded portion, area of shaded portion is equals to, same thing you have to do is bigger rectangle में से smaller rectangle को minus कर दो. So 480 minus 396 is equals to how many? कितना होगा? 84 meters square. Yes. So like this way you have to find out this type of like shaded area. अगर find करना हो
ये वाला पोर्शन अगर फाइंड करना हो ना तो ये याद रखना, जो बिगर में से अगर इसमें स्मॉलर को माइनस कर दो देन योर आंसर विल कम्स आउट. ओके, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू. चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 से क्या आ रहा है, लाइक व्हाट प्रॉब्लम, जो कि आप लोगों को हार्ड लगता है बट हार्ड हालांकि होते नहीं है. सो ऑल ऑफ यू जस्ट रीड वन टाइम क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2, ऑल ऑफ यू ओपन योर बुक. A photograph of sides 35 centimeter by 22 centimeter. Actually by means remember जो आपको पहले वाला लेंथ जो वैल्यू होता है that is length and second one that is breadth. Means suppose this type of photograph is here. अच्छे से देखना, this is the photograph. चलो मैं फोटो ही बना देता हूँ. Okay, now this type of photograph is there. In this photograph length is given 35 by 22. Got it? This type of photograph 35 by 22 and इस photograph का frame भी है. What is the frame? Frame is given that is 45 centimeter length and breadth is given how many? 30 centimeter. So what we have to find out? इस क्वेश्चन में आपको ये बोला है find the area of the border. जो हमारे पास ये border दिख रहा है आपको, this border, what is the area of this border? Border means जो हमारे पास बहुत सारे डिजाइन करते हैं ना हम border में, उस डिजाइनिंग एरिया को आपको फाइंड करना है. So we have to find out this area of shaded portion only. Same process. सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा? Area of the bigger rectangle, then area of the smaller rectangle, then minus. So let's see, similar way we'll do. Area of photograph है ना, photograph फाइंड कर लेते हैं. स्मॉलर रेक्टेंगल, फोटोग्राफ है स्मॉलर रेक्टेंगल. So area of photograph is equals to 35 multiplied by 22. How many meter square? Centimeter square. That is your 35 multiplied by 22, that is 770 centimeter square. Okay, this is the area of photograph. चलो मैं अब फोटो फ्रेम का वर्ड निकालता हूँ. एरिया ऑफ फोटो फ्रेम, area of photo frame is equals to 45 multiplied by 30 centimeters square. Yeah, we can say 1350 centimeters square. This is the area of photo frame. अब मैंने बोला आपको एरिया ऑफ बॉर्डर निकालना है. सो एरिया ऑफ फोटो फ्रेम को एरिया ऑफ फोटोग्राफ से माइनस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? डिजाइनिंग एरिया आ जाएगा. जो आपके बॉर्डर एरिया है ना दैट विल कम्स. सो एरिया ऑफ border is equals to 1350 minus 770 centimeters square. Okay, so what is the correct answer? 580 centimeters square. That is your complete answer. Okay, so this is your question number 2. Now tell me all of you, understood or not? Easy questions, हार्ड नहीं है, प्रोसेस सेम है, सिर्फ वही सेम है, रेक्टेंगल में से बड़ी बिगर रेक्टेंगल माइनस स्मॉलर रेक्टेंगल, और कुछ भी नहीं है. ओके, नाउ विल मूव नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट्स सी. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. यस, सो क्वेश्चन नंबर 3, all of you check it here properly. A veranda is there. A veranda is there that is 1.25 meter wide, is constructed all along the outside of a room which is 5.5 meter long and 4 meter wide. So find the cost of cementing the floor of this veranda at the rate of ₹15 per square meter. बात अच्छे समझना है आपको. Suppose this is a room and this is your veranda. Which one? This one. और इसको आपको क्या करना है? Cementing of the floor. This floor you have to cementing. But इस क्वेश्चन में आपको ये नहीं बोला है you have to find out the area. इस क्वेश्चन में आपको ये बोला है you have to find out the total cost. अगर हम इसको cementing करेंगे, cemented करेंगे, है ना, so obviously उसके लिए कुछ खर्चा होगा, कॉस्ट उसके लिए फाइंड करना होगा. बट
कॉस्ट हम डायरेक्ट नहीं फाइंड कर सकते, वी कांट फाइंड आउट डायरेक्टली कॉस्ट. सो दैट्स व्हाई फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द व्हाट. सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द एरिया, व्हाट इज द सरफेस एरिया, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस पोर्शन. जो भी आपके पास एरिया आएंगे इस एरिया का, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 15 रुपीज से. अंडरस्टूड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू फाइंड आउट व्हाट इज द टोटल कॉस्ट. इसके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत आपको समझना भी है इसमें. सी, first of all, this one portion is given 1.25. How many? 1.25. This is also 1.25. This is also 1.25 and this is also 1.25. This is width. ये width दे रखा है. Okay, sir. Now, see all of you. This is 5.5 meter long. How many meter? 5.5. And breadth is how many? 4 meter. बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना. This is 5.5 meter long and width is given how many? 4 meter. Now students, if it is 5.5, so ये कितना होगा? अच्छे से सोचो. If it is 5.5, then what is the length of this one? 1.25. This is 1.25. This is 1.25. This is 5.5. So ये total कितना होगा? We can't say like this 1.25. ये वाला हो गया sir. We can say this is 1.25. So if I add them, that is 2.5. And this is also add. So 5.5 also is add. So that is 8.0. That means we can say the length of this bigger rectangle, that is 8 meter. And what is the length of this, sorry, what is the breadth of this rectangle? That is 4 plus 1.25 plus 1.25, that is 6.5 meter. Okay, now find out area of bigger rectangle. Area of bigger rectangle is equals to 8 multiplied by 6.5. So if you multiply 8 multiply 6.5, that will how many come? That is your 52 meter square. Okay. So इस bigger rectangle का आ गया. अब हमें इस room का निकालना है. So we can say area of smaller rectangle. इसको हम room को हम smaller rectangle मान रहे हैं. तो smaller rectangle या bracket में आप लिख सकते हो room is equals to how many students? 5.5 multiplied by 4. That is how many? 22 meter square. 22 meter square. Okay. ठीक है sir. Now we have to find out the area of veranda. 52 minus 22. 52 minus 22 meter square. Yeah, we can say 30 meter square. This is the area of veranda. This is the area of veranda. Okay. अब ये जो हमारे पास वरांडा का एरिया आया, मतलब ये जो एरिया आया, इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? विल मल्टीप्लाई बाय 15, बिकॉज क्वेश्चन में ये बोल रखा है पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट इज 15 रुपीज. सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द वरांडा? सो वी विल डू, so total cost is equals to 30 multiplied by 15 is equals to, we can say, rupees 450. This is the total cost. Understood? Rupees 450. This is your total cost. Understood all of you? So this is your done question number 3. So I think till question number 3 no doubt is there. Okay, now we'll move question number 4. So let's see here. Same question, question number 4, 3. Now all of you see, one time just read the question. A sheet paper is there, like this type of sheet paper is there. This is your sheet paper, rectangular sheet paper. In this rectangular sheet paper, say this is 30 centimeter long. This is 30 centimeter long and 25 centimeter width. Now in your question says a strip is cut 4 centimeter. एक स्ट्रिप कट करना है आपको 4 सेंटीमीटर ऑल अराउंड, चारों तरफ से आपको एक
So all of you one time do one thing, मेरे साथ भी आपको करना है. सबसे पहले आप इस टाइप का एक शीट ले लो, and after that you have to cut one like 4 centimeter strip. So मैं भी कट कर रहा हूँ, आप भी कर सकते हो like this. 4 centimeter, you can take any centimeter, no issue, but इस टाइप में आपको एक शीट कट करना है. Okay, all of you do with me, and after that I will tell you what the question says. Exactly, this is not looking a rectangle. If you use your scissor, then it will come straight with like मैं hand से कर रहा हूँ, that's why it will maybe not come. Okay, so some this type of strip will cut. Yes, understood. This is not looking like a TV. Okay, so your question says, if I cut this strip, then what is the area of this remaining sheet? ये जो remaining sheet है, इसका area कितना आएगा? So first of all, we find out this area, ठीक है? And first of all, we will find out this area of this bigger rectangle. अब इस bigger rectangle में से अगर मैं smaller rectangle को minus कर दूं, then we can say the area of this strip will comes. आपको इसका भी एरिया फाइंड करना है एंड आपको इसका भी एरिया फाइंड करना है. दैट बोथ वी हैव टू फाइंड आउट. अब हाउ वी विल फाइंड आउट, लेट्स सी. चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस क्वेश्चन सेज वन प्लास्टिक शीट इज देयर. आई शो यू, आई शोन यू आल्सो. सो लाइक दिस टाइप ऑफ शीट था हमारे पास एक. दिस इज 30 सेंटीमीटर, दिस इज 20 सेंटीमीटर. ओके, चारों तरफ से आपको 4 सेंटीमीटर को एक क्या कट करना था, स्ट्रिप. So this is 4 centimeters. Suppose it is 4 centimeter. It is also 4 centimeter. So इसका length कितना हुआ? The length of this sheet is equals to 22 centimeter. और इसका breadth कितना होगा? That is 20. So 20 minus 4, that is 12 centimeter. So first of all of you find out area of this bigger rectangle. Bigger rectangle का find करना ही है. So 30 multiplied by 20. centimeter square, that is 600 centimeter square. Okay, now all of you find out area of this remaining sheet जो है ना, ये remaining sheet है. So इसका एरिया निकालोगे और like smaller rectangle का एरिया निकालोगे, both are same. So area of remaining sheet is equals to 22 multiplied by 12 centimeter square. That is 264 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, इस रिमेनिंग शीट का इसका एरिया निकल गया, इसका एरिया निकल गया ना. देन वी विल फाइंड आउट दिस स्ट्रिप, एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप. सो एरिया ऑफ स्ट्रिप इज इक्वल्स टू, अब सुन लो, इसका आपको एरिया फाइंड करना है, इसका एरिया. सो बिगर रेक्टेंगल, सॉरी 600 माइनस 264 इज इक्वल्स टू 336 सेंटीमीटर स्क्वायर. दैट मीन्स वी कैन से जो हमारे पास स्ट्रिप था उसका एरिया आ गया. सो लाइक दिस वे वी विल फाइंड आउट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड. स्टिल क्वेश्चन नंबर 4, नो इश्यू इज देयर. ओके, नाउ इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल मूव फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5 to question number 9 is there. That all the question we have to solve in our next video. Thank you. Have a nice day.